हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, जहां पे एक लेटर भेजा गया है गॉड को। इट शोज द फेथ इन गॉड। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डायरेक्टली। स्टोरी हमारी शुरू होती है बेसिकली प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो मेन हीरो है उसके घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ही इज अ फार्मर बाय प्रोफेशन, और फार्मर होते हुए आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ रहता है। सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, तो हमें इससे पता चलता है कि पूरी एंटायर वैली में वो अकेले रहते थे। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? जो हिल है उसके टॉप पर एक अकेला घर था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इसका मतलब है कॉर्न्स बिल्कुल रेडी थे हार्वेस्ट के लिए। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब आप कटाई करते हो बेटा, बेसिकली, ठीक है। हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी थे, और आप ऊपर से एक ब्यूटीफुल रिवर देख सकते थे और कॉर्न्स दिख रहे थे फुल ऑफ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है रेनफॉल, ओके, अ हैवी रेनफॉल। सिर्फ एक रेनफॉल का वेट हो रहा था, और एटलीस्ट अ शावर, या छोटा सा शावर हो जाए। पानी जैसे ही मिल जाएगा इन लोगों को, द क्रॉप विल बी रेडी एंड हार्वेस्टिंग कैन बी डन। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो इज द नेम ऑफ आर प्रोटोगोनिस्ट, हमारा मेन लीड जो एक फार्मर है, who knew his fields intimately, जो अपनी फील्ड्स को intimately मतलब अच्छे से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो उसने कुछ भी नहीं किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? वो बारिश को देख रहा था, स्काई को देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सिर्फ बारिश चाहिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और उसको आसमान देख के समझ में आ रहा था कि मौसम थोड़ा सा हो गया है, और बारिश जैसा, जैसे काले बादल आ रहे हैं, तो उसको दिख रहा था कि बारिश होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ को बोलता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर बेटा अर्ली डिनर को कहते हैं। व्हेन यू नो टेक योर डिनर अर्ली, दैट्स कॉल्ड अ सपर, अराउंड 7:30। फॉरेन में ऐसे ही होता है। तो पहला बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, वो आता है बोर्ड एग्जाम में, हु वाज लेंचो। सो यू विल राइट लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। ओके, jot down the point. Second question जो आता है, where does he live? He lived alone in the entire valley on the crest of a low hill. So this is the question. ये दोनों एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। Now let's go ahead. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. वो कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल पानी मिलेगा। The older boys were working in the field. Older boys मतलब उसके बेटे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। और छोटे वाले जो थे वो कहाँ खेल रहे थे? घर के बाहर। Come for dinner। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. बिल्कुल जैसा लेंचो ने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही हुआ, और बारिश शुरू हो गई। बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो ऐसे बाहर जाके ना खड़ा हो जाता है, महसूस करता है बारिश को। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और फिर वो बोलता है ना उसको फील करके, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। So this is the board exam second important questions. Why does he call raindrops as new coins? Okay, और फिर वो बोलता है the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5। और वो कहते हैं जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट हैं। बेटा वो उनको न्यू कॉइन्स इसीलिए बोलता है क्योंकि एक्चुअली रेन
meant a good harvest. और अगर good harvest होगा तभी तो उससे वो पैसा कमाएगा उसको बेचकर, right? So that's why it is money for them. है ना? Rain is actually gonna bring prosperity. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. अब वो न्यू सिल्वर कॉइन्स किसको बोल रहा है? अनदर क्वेश्चन, दो डिफरेंट क्वेश्चंस है, वो न्यू कॉइन्स बोलता है एक बार और एक बार सिल्वर कॉइन्स बोलता है. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Yes, जो वो सिल्वर कॉइन्स बुला रहा है वो हेल स्टॉर्म आ गई है. हेल स्टॉर्म मतलब ओले. आपने कभी बारिश में ओले कलेक्ट किए हैं बाल्टी में किसी बर्तन में? सो जब मैं छोटी थी, यू नो, वी यूज्ड टू डू दैट. तो अचानक विंड तेज हो जाती है और हेल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं और वो रिजेंबल करते हैं सिल्वर कॉइन से. तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड्स में. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर. सिल्वर कॉइन्स आर रिलेटेड टू हेल स्टोन्स. ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब वो घबराता है. It did not pass quickly. मगर ऐसा होता नहीं है. वो सोचता है जल्दी जल्दी चले जाए. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley. हर जगह गिर रही है बारिश और हर जगह हेल गिर रहे हैं उसके साथ. The field was white as if covered with salt. Now the board exam question, the next board exam question is why the hailstones? जो ये बर्फ के गोले हैं उसको उन्होंने सॉल्ट से क्यों कंपेयर किया है? हालांकि सॉल्ट भी वाइट होता है, हेलस्टोन्स भी वाइट हैं, मगर शुगर के साथ भी तो कंपेयर कर सकते थे. बिकॉज बेटा सॉल्ट जो होता है ना, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव. अगर आप किसी प्लांट में सॉल्ट डाल दोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से. एंड दैट्स व्हाट हैड हैपेंड. ओके, यस. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. वो बिल्कुल दुख से भर गया है. He stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts." Locust एक कीड़े हैं. अगर उसका प्लेग लग जाए, मतलब वो बीमारी लग जाए पूरे पौधों में, have left more than this. तो भी इससे कम डिस्ट्रक्शन होता. The hail has left nothing. This year we will have no corn. The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's one, there's no one who can help us. We will all go hungry this year. And this is what has happened. And he's very upset. So now the important questions. What did Lencho hope for? Beta, what did Lencho hope for? He just hoped for a downpour or a shower. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Because they promised a good harvest. Rain for him was money because, you know, if it rains, then only he can get his crops, right? How did the rain change? Suddenly, strong winds blew and hailstorm came. What happened to Lencho's fields? They were completely destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? Lencho's feelings were he felt as if, everything was ruined and there was no hope, and he was full of sadness or melancholy. All the question answers, notes, you will get it. Don't worry about that, okay? But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. This shows the whole family believed in God. और बेटा इसमें एक और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट्स काइंड ऑफ अ वैल्यू बेस्ड. जब भी प्रॉब्लम आती है किसी भी इंसान पे तो उसकी फैमिली साथ होती है, इन दैट स्ट्रगल. इट्स नॉट दैट वन ऑफ देम इज गोना फेस, एवरीबडी इज टुगेदर इन इट. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger.
All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. Ox of a man means he was very hardworking, beta, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप टूटता है. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब आप सोचते हो कि फार्मर जो गरीब है जो मेहनत कर रहा है वो अनपढ़ ही होगा. तो यहाँ पे एक और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि लेंचो कैसे डिफरेंट था. लेंचो बिल्कुल डिफरेंट था. Though he was an ox of a man, okay, he worked like an animal in the fields, but still he knew how to write. And he was a literate. The following Sunday at daybreak matlab subah subah early morning, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो फिर वो फटाफट एक लेटर लिखता है और मेल लेके जाता है. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और फिर वो गॉड को लेटर लिख रहा है. गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos. Pesos is currency, okay? लैटिन अमेरिका में बहुत जगह यूज होती है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म have destroyed everything. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled. ऊपर उसने लिखा है to God. Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter, dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman, also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, अब वो postman पास postmaster के पास लेके जाता है. A fat amiable means friendly, है ना, मजे करने वाला बंदा, fellow. Also broke out laughing. बड़ा हंसता है बेटा. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. Correspondence मतलब आप चिट्ठी लिख रहे हो गॉड को. क्या फेथ है. तो क्वेश्चन आता है कि पोस्ट मास्टर ने क्यों मदद करने की कोशिश की गॉड, लेंचो की. क्योंकि वो चाहता था, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident to answer it he needed something more than goodwill. गुडविल के साथ जब उसने खोला तो उसको दिखा कि कुछ और भी चाहिए. क्या चाहिए था बेटा? पैसे, 100 pesos. But he stuck to his resolution. But उसने resolution ले ली थी. He said, I'm gonna help. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature: God. और फिर वो फटाफट लेटर लिखता है और पैसे भेजता है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter. Postman देता है उसको letter. While the postmaster, experiencing the contentment और बहुत satisfied है, खुश है कि हमने मदद की एक आदमी की, performed a good deed, Lencho showed not the slightest surprise, और वो बिल्कुल surprised नहीं था seeing the money. Such was his confidence, but he became angry. Next board exam question, वो क्यों गुस्सा हो गया? When he counted the money, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. बड़े गुस्से में लिख रहा है, caused by the effort he had to make to express his ideas. Ideas के लिए पूरा मुंह बनाता है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed, okay, the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So
लेंचो को लगा कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, और भगवान ने जो पैसे भेजे उसमें से पोस्ट ऑफिस के लोग जो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, उन लोगों ने पैसे मार लिए। जस्ट इमेजिन, दिस वाज व्हाट वाज रिटन। तो यहाँ पे एक और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक इज इट करेक्ट on Lencho's part to call him bunch of crooks, you know, post office employees को? So you can write it. एंड एक और बात है कि ये जो पोस्ट मास्टर है ना, वो बिल्कुल मोमेंट लेटर फेल करता है, जैसे ही डालता है वो तुरंत जाता है। तो क्या अगर आप गुड डीड्स करते हो तो आपको उसके बदला भी देखना होता है, रिप्लाई भी चाहिए। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको उसके बाद उसको भूल जाना चाहिए। यू शुड नेवर थिंक अबाउट इट, यू नो, कि उसका क्या हुआ। सो दैट्स ऑल्सो मैटर्स। So I hope you understood the chapter well, and please prepare these board exam questions. Okay, don't get confused. Thank you for watching this video. Bye. Have a nice day.